अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से पुनः साधना करते करते आज 1216 दिन हो गए। तारीख 7 मार्च सन 2025, दिन शुक्रवार, प्रातः काल का समय। तो प्रसंग पुनः की चल रही है। अपने श्वास को देखिए तो कैसे दिखाई दे, महसूस करिए। कैसे महसूस करें? दृष्टा दृश्य के अभ्यास से। श्वास मेरा दृश्य है, मैं उसका उपभोक्ता, जानने वाला, प्रयोग करने वाला, देखने वाला, महसूस करने वाला। कैसे चल रहा है? तो तेज गति, मध्यम गति, धीमी गति। श्वास में हमें क्या मिल रहा है? तो ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य। तो वर्तमान समय में हमारा अपना श्वास हमें क्या महसूस करा रहा है, इसे देखना है। पश्चिम में बारिश भी हुआ है, बर्फ भी गिरा है, जिसके कारण वर्तमान समय में हवा में ठंडी है। तो पूरे शरीर को भी ठंड का अनुभव करा रहा है, सिर्फ श्वास को ही नहीं। तो श्वास हमारा हमें ठंड और शीतलता का अनुभव करा रहा है। अब इसे ही लगातार आप देखिए और देखते देखते अंत में क्या महसूस होता है, ये महसूस करिए। भीतर से चेतना रहे। चेतना इस बात का रहे कि मैं अपने श्वास को देख रहा हूं और मेरे श्वास में मुझे ठंड और शीतलता का अनुभव हो रहा है। नाक के निचले हिस्से पर, ऊपरी ओठ के ऊपरी हिस्से पर हमें क्या महसूस हो रहा है, इसका भी ध्यान रखा जाए। और हमारे नई चीज आज देख लीजिए कि मेरे श्वास में किसी प्रकार का कोई आवाज तो नहीं है। तो जैसे जैसे मन एकाग्र होगा और लगातार देखने की वजह से स्थिर होगा और मन किसी प्रकार का कोई बाहरी ख्याल नहीं करेगा, तो शांत भाव में बना रहेगा। तो जो कुछ भी इस श्वास में हो रहा होगा वह मुझे अलग से महसूस कराएगा या मुझे महसूस होगा।
तो श्वास को देखते समय शीतलता का, ठंड का, सूखापन का अनुभव तो कराएगा, लेकिन आवाज भी हो रही है साए साए की। हम भीतर श्वास को खींच रहे हैं तो उसकी आवाज अलग हो रही है, और भीतर से जब बाहर निकाल रहे हैं हवा को तो उसकी आवाज अलग हो रही है। भीतर से चेतना हो, और भीतर की चेतना से ही हम महसूस करें कि मेरे ही अपने श्वास में क्या क्या मुझे महसूस हो रहा है। हवा में इतनी ठंडी है कि श्वास जो मैं ले रहा हूं उस श्वास के माध्यम से हवा ठंड ठंड भीतर जा रहा है, और मेरे गले और गले के नीचे एकदम शीतलता का और ठंड का अनुभव करा रहा है। यानी मैं महसूस कर पा रहा हूं कि गले के नीचे तक वर्तमान में पूरा ठंड ठंड, जैसे आप वृक्ष का सूंघने वाला होता है लंबा, उसे जब सूंघते हैं तो गले तक कैसे ठंड ठंड का अनुभव होता है, उसी तरह से वर्तमान में महसूस हो रहा है। महसूस करता जो मेरे भीतर की चेतना है वह तभी इतनी गहराई तक जा पाएगा जितना ही मन एकाग्र और स्थिर होगा, और मन की चंचलता खत्म होकर बिल्कुल एक विषय पर हम काम कर रहे होंगे। एक विषय पर जब तक काम नहीं किया जाता है ये मन चंचल रहता है। ये भी कर लें, वो भी कर लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें, इनसे बात कर लें, उनसे बात कर लें, इनसे मिल लें, उनसे मिल लें। वो उसी में अपना समय पूरा बर्बाद कर देता है, अपना जो मुख्य काम है वो नहीं कर पाता है। मानव जीवन का मानव जीवन का ही पूरा एकाग्रता में रह करके अपने आप का परिचय करना है कि आखिर मैं हूं कौन। तो अपने ही श्वास पर मन को केंद्रित करिए, और केंद्रित करके स्थिर करिए, लगातार देखिए। अंत में देखते देखते क्या महसूस होगा, महसूस करता क्या क्या महसूस करता है, क्या क्या देखता है, या उसे क्या क्या दिखाई पड़ रहा है, ये खुद महसूस करिए।
हम्म।
हम्म, 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 हम्म,
अब देख रहे होंगे कि दृष्टा दृश्य का अभ्यास भी एक के रूप में आ गया, और जो हम महसूस कर पा रहे थे वो महसूस पना भी खत्म हो गया और अपने आप में एकदम शांत।